Hello students, welcome to Meetu Maths classes. Your question is, evaluate integral of sine inverse square root of x upon a plus x dx. Now to integrate this type of function, it is very difficult to integrate inverse trigonometric function directly. So we can do one thing. यूजिंग सब्सटीट्यूशन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो पुट x इज इक्वल्स टू a tan square theta. Then your dx will become, differentiating both sides, your dx will change into tan square theta का 2 tan theta और tan theta का इंटर्न डेरिवेटिव sec square theta d theta. Now your I will become sine inverse of square root of, this is x. X is a tan square theta upon a plus x is a tan square theta, and dx can be replaced by 2a tan theta into sec square theta d theta. Now this will be equals to sine inverse of, अगर आप a कॉमन ले लेते हैं नीचे से भी तो a will cancel out, square root of tan square theta upon 1 plus tan square theta will give you sec square theta. 2a can be taken out into tan theta sec square theta d theta. तो ये tan square theta upon sec square theta will give you sin square theta, and square root of sin square theta is sin theta. So sin inverse of sin theta will become theta only. Okay. Now we can do one thing. We can choose this as trigonometric function because ये आपका इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, and this can be your we can choose by parts, और by parts के लिए आपको आइलेट फॉलो करना पड़ेगा. तो सेकेंड फंक्शन जो इंटीग्रेबल फंक्शन है उसे आप सेकेंड चूज कर लो, एंड दिस कैन बी योर फर्स्ट फंक्शन. सो यूजिंग बाय पार्ट्स we get, using by parts we get I is equals to 2a first function as it is, second का इंटीग्रल tan theta sec square theta d theta minus इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रल एंड होल इंटीग्रल. ठीक है, ये आपने बाय पार्ट्स यूज करा, एंड इसके अंदर आपको इंटीग्रल ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा चाहिए होगा, तो इसको आप सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ इंटीग्रल ऑफ tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा में आप अगर सब्सटीट्यूशन करते हो tan थीटा को y, then sec square theta will be d theta will become dy, and your integrand will become sec square theta d theta can be replaced by dy, and this is y, which is equals to y square upon 2 plus c, or we can write it as half tan square theta. So the integral of tan theta sec square theta is half tan square theta. So write it down here, theta, and integral of tan theta sec square theta is half tan square theta minus integral of theta is 1, derivative of theta is 1, and integral of this is half tan square theta d थीटा. अगर आप इससे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो 2 विल कैंसिल आउट, a
theta tan square theta minus half will cancel out a integral of tan square theta, and tan square theta can be written as sec square theta minus 1, क्योंकि tan square theta को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं. And this will give you theta tan square theta minus a sec square theta का डेरिवेटिव tan theta होता है. Integral of sec square theta is tan theta and integral of 1 is theta. Okay. Now at last you are going to substitute back your theta in terms of x. So your x will become in terms of x. अगर आपका x is equals to ये है तो x by a will be your tan square theta. Okay, and tan theta is equals to square root of x by a, and this is tan theta. और थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x by a. ठीक है, दिस कैन बी द चेन ऑफ सब्सटीट्यूशंस. अब आपको सब्सटीट्यूट बैक करना है अपने थीटा को, tan स्क्वायर थीटा को, tan थीटा को. सो वी कैन डू वन थिंग. थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय a tan square theta is x by a and theta is tan inverse of square root of x by a minus a tan theta. Tan theta can be replaced by square root of x by a minus plus a theta can be replaced by tan inverse of square root of x by a plus c, and this is equals to x tan inverse of square root of x by a minus square root of ax plus a tan inverse square root of x by a plus c, and this is your required answer.